Good evening, guys. Time is 10:49 and शाम को एक प्लान फाइनल हुआ है और उस प्लान के हिसाब से वी आर लिविंग फॉर अ राइड एंड कहाँ जा रहे हैं ये कल सुबह पता चल जाएगा। सुबह इसलिए बोला है बिकॉज वी आर riding at night. Yes, we are starting our ride at 10:50 p.m. Yes, and yes, this is our first night ride, so we want to experience that. And इस राइड के लिए we have बोरसे साहब जो कि हमेशा रेडी रहते हैं राइड के लिए, एंड वी हैव योगेश जो मेरा स्कूल का दोस्त है एंड ही वांट्स टू लाइक वो भी काफ़ी बाइक यूज़ करता है एंड इसके पहले राइड भी किया है उसने। सो नाउ ही वांट्स टू फिर से राइडिंग चालू करना है। सो करेंटली ही ओन्स अ KTM 390 एंड अगेन लगे उसको भी इमीडिएटली आफ्टर कपल ऑफ राइड एक कंफर्ट लेके ही वुड बी लाइकली अपग्रेडिंग हिज बाइक टू आइदर कावासाकी Z सीरीज Z900 या फिर मॉन्स्टर 821 जो डुकाटी का है। ये मेरा पहला लंबा वाला राइड रहेगा on my Tiger and super excited. Yes, ये है हम द्वारका सर्कल पे, कहाँ है बरसे साहब। So this was our meeting point. रुक गए हो गए कहीं ना कहीं, let's find it. शायद आगे खुली जगह में जाएंगे। So where is the हिमालयन कहाँ है? हिमालयन तो आए नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। I think I should call him. You know, Borse Saab is here. So by law, we have started towards Pune. पहले तो पूना जाएंगे और फिर पूना से डिसाइड करेंगे शुड वी टेक कोल्हापुर साइड और शुड वी टेक सोलापुर साइड। तो शायद पूना में जाके दोनों में से एक डेस्टिनेशन शायद क्या फाइनल करना ही पड़ेगा, सो दैट आपको बताऊंगा पूना पहुंचने के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल तो first tea break now and about 100 kilometers from Nasik. बीच में थोड़ा ठंडा था, so far so good and अच्छा लग रहा है, it's good. We have reached Pune. Its time is like 2:30 और ऐसा पुणे किसने देखा है क्या? देख लो खुला रास्ता, वाह इट्स लाइक वाह। सो फार सो गुड, इट्स फन, मज़ा आ रहा है। वी आर वेटिंग फॉर योगेश।
आता है। And good morning from Kolhapur. I reached Kolhapur and look at the sunrise, beautiful. Look at this, wow. And the beauty is like you can see the sun and I hope you can see the moon. Wow, beautiful. So we just कोल्हापुर क्रॉस किया एंड गोवा कर्नाटका के बॉर्डर पे थोड़ा ब्रेक लिया एंड इट्स लाइक हाँ तो कल हम मैं पूना में पहुंचने में ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन पूना में पहुंचने के बाद वही वी डिसाइडेड कि नॉट सोलापुर, कोल्हापुर साइड जाएंगे एंड कोल्हापुर साइड जाएंगे। तो आप सब लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, यस वी आर गोइंग टू गोवा एंड नाउ इट्स 11:30-12 बजे तक पहुंच जाएंगे। So, कर्नाटका के बॉर्डर पे कोई कोविड रिलेटेड तो कुछ था ही नहीं, इट्स ऑल ओपन नाउ। Anybody who wants to travel to Goa via this route from Amboli Ghat, they can travel. कोई चेकिंग नहीं है, कोई RT-PCR नहीं है, कोई डबल वैक्सीनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। First break of the next day. Misal the pav.